All right, just a quick check if you're able to hear the voice properly and if you're able to see the screen. We'll begin with the session now. All right. So please put a thumbs up if you're able to hear my voice. All right. So in this session, we'll be looking at tables. So HTML2 में हमारे दो parts हैं. One is the table part, where we see how to create various tables, and the other part is where we see how to insert audio and video. Welcome Ishan. Hello Aditya. All right. So everyone who has doubts in this part, हम लोग इस सेशन में सिर्फ tables ही cover करने वाले हैं. हम लोग देखेंगे what is row span, what is column span, how you can create tables. It is not a difficult topic, but अगर आपको concept में थोड़ा problem आ रहा है, it can be a source of problem. Welcome Aditya. All right. So let's begin with the session. So most of you might know my name already. My name is Aakash. I'll be teaching you CA 165 in this session, and I hope your preparation is going really well for tomorrow's exam. We have multiple sessions lined up today, जहाँ पर हम लोग next session में full one shot revision करने वाले हैं, and after that at 9 PM we'll be solving a sample paper and multiple practice questions so that in the exam ऐसा कोई भी question ना हो जो आपने पहले नहीं देखा हो. Hello Baron, welcome Vanchika. Hello Ishita. Good afternoon Kauravi. Okay. So we'll be looking at how you can create tables. So everyone might know आप table tag use करते हो, TD, TR, TH, but the major part of difficulty what I feel is row span and column span. हम लोग वो अच्छे से discuss करेंगे. We will also look at some attributes of table, जैसे border हो गया, border का color आप क्या रख सकते हो, alignment, cell padding, and at the end we will solve about two theory questions about 6 to 7 MCQs and 2 previous year questions, right? Okay. So first of all, the most important concept जहाँ पर लोगों को difficulty आती है is row span and column span, but also there are multiple attributes. तो जब भी आप कोई table create करते हो, your table is in the form of this figure. अब कभी कभी क्या होता है, if your cell spacing is 0, what will happen is it will create a table like this, right? Cell spacing क्या होता है, दो cells के बीच में जो जगह होती है उसको हम लोग cell spacing बोलते हैं, and it is a very easy concept because spacing का मतलब होता है. And cell padding is another concept where the text inside the cell has a distance from the outer boundary of the cell, right? ये जो distance दिख रहा है, so आप जितना cell padding बढ़ाओगे उतना ये जो distance है वो increase होगा. And if your cell padding is 0, then how will your cell look like? It will look something like this, right? There is no space over here. Welcome Srijan. ठीक है, सो आपको सेल स्पेसिंग याद रखना है क्योंकि इट इज एन एट्रीब्यूट जो आपको पूछा जा सकता है, आपको सेल पैडिंग पूछा जा सकता है, एंड दीज टू आर नॉर्मल थिंग्स व्हिच यू ऑलरेडी नो. टेबल सेल से बनता है एंड देयर इज अ बॉर्डर, so border was also done in the CSS part. So anyone else having any difficulty in the CSS part? हम लोगों ने पहले ऑलरेडी कवर कर दिया था. नेटवर्किंग, तो स्पर्श नेटवर्किंग विल हैपन एट 6:30 PM जहां पर हम लोग वन शॉट रिविजन करेंगे. नाउ आई नो आपने सब थ्योरी कवर कर लिया, यू हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बट ड्यूरिंग द वन शॉट व्हाट शुड हैपन इज इफ यू आर not comfortable with a particular topic, you should definitely ask questions. या फिर अगर आपको कोई ऐसा difficult question आपके सामने आया which you were not able to solve, or maybe you missed out a few steps, in this one shot I would like you to ask questions and please explain cell spacing and cell padding again. All right Vanchika, give me a moment. So generally जब हम लोग table बनाते हैं, your table looks like this, correct? आपका जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, गूगल शीट्स होता है, इट लुक्स लाइक दिस. तो यहाँ पर जो सेल 1 है, सेल 2, 3, 4, 5 एंड 6, देयर इज नो स्पेस बिटवीन द सेल्स. अगर आप देखोगे देयर इज नो स्पेस, बट इफ वी स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग अ सेल स्पेस, फॉर एग्जांपल इफ आई से सेल स्पेस बिकम्स 1, तो ये वाला जो टेबल है ये थोड़ा ऐसा दिखने लगेगा. सेल स्पेसिंग इज नथिंग बट द स्पेस बिटवीन द सेल्स. ओके,
अगर आप सेल स्पेसिंग और बढ़ाओगे तो आपके जो सेल्स के बीच में स्पेस है वो और इंक्रीज होता रहेगा. सो दिस इज अबाउट सेल स्पेसिंग. एंड सेल पैडिंग इज नथिंग बट, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये टेक्स्ट लिखा है, ओके, एंड ये एक सेल के अंदर है. इफ आई इंक्रीज द सेल पैडिंग, व्हाट विल हैपन इज, टेक्स्ट वैसे का वैसे ही रहेगा, बट आपका जो पैडिंग है, जो स्पेस है बिटवीन द टेक्स्ट एज वेल एज द सेल बाउंड्री, वो इंक्रीज हो जाता है. बट इफ आई कीप सेल पैडिंग एज 0, व्हाट विल हैपन इज, it will look like this. There is no space between the text and the cell boundary. All right, so was this clear? ठीक है, बाकी तो आपका सेल है एंड बॉर्डर है, which we have already covered before. So also another important thing which you have to remember, अगर आपको attributes अच्छे से याद रखने हैं, please remember that these things are known as columns and these are known as rows. Why I am telling you this is because जब हम लोग column span और row span पढ़ेंगे, this information will be very valuable. ठीक है, so let's go ahead. These are basic commands. You have already seen them. It is nothing new, but let's go through them again. Table, obviously, it starts the table. आपका table close भी करना होता है आपको. तो जितना भी आप table का जितना भी content लिखोगे, caption, rows, columns, data, everything will come inside this tag. Okay, can you please send the notes on tele? What is tele, Sumit, for last minute revision? Yes, definitely I'll be sharing the notes today again. Default value of spacing and padding, I think the default value always stays 0 for padding and cell spacing 0 होता है, but रिमेंबर जो आपका बॉर्डर का डिफॉल्ट वैल्यू दैट इज 1. ओके, ये जो डिफॉल्ट वैल्यूज है हम लोग देखेंगे एट्रीब्यूट्स में. ठीक है, सो नेक्स्ट अप इज टेबल रो एलिमेंट. सो फॉर एग्जांपल वी हैव स्टार्टेड क्रिएटिंग अ टेबल. हमारा टेबल स्टार्ट हो गया वरना, एंड दिस इज डन बाय दिस टैग. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, हम लोग स्टेप वाइज जाते हैं. सबसे पहले फर्स्ट रो क्रिएट होती है. ठीक है, नाउ इट्स अप टू यू कि आप उस रोज में कितने एलिमेंट्स डालोगे. ठीक है, आप कितने भी एलिमेंट्स डाल सकते हो, बट दिस थिंग इज डन बाय tr. ठीक है, एवरी टाइम यू वांट टू ऐड अ रो यू स्टार्ट यूजिंग tr. ठीक है, नेक्स्ट अप हम लोगों ने रो भी क्रिएट कर दी. इसके बाद हम लोग डेटा एलिमेंट्स क्रिएट करेंगे. सो यूजिंग दिस हम लोग एक टेबल बनाते हैं. यूजिंग दिस आपकी जो है रोज क्रिएट होती हैं. And when we start using TD, generally क्या बोलते हैं, columns are created like this. Okay, so we have 3 things now. These are the most basic things. But कभी कभी क्या होता है, आपको आपका जो टेक्स्ट है, तो आप फॉर एग्जाम्पल when we use TD, I'm writing 1 2 3 4 5 and 6, ये जितने भी एलिमेंट्स है, जितना भी टेक्स्ट है, वो आपका आता है टीडी टैग के अंदर. फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू राइट नेम, राइट, लेट्स से इफ आई एम क्रिएटिंग अ टेबल लाइक दिस. यहाँ पर मैंने लिखा ABCD, बट ओवर हियर दिस वन इज इन बोल्ड. ठीक है, तो ये जो सब एलिमेंट्स है, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, इट विल यूज टेबल डेटा टैग. बट जो ये E और F है, इसके लिए स्पेसिफिकली एक अलग टैग आता है जो टेक्स्ट को बोल्ड करता है. दैट इज नोन एज द टेबल हेडिंग, टेक्स्ट हेडिंग. ओके, कैप्शन टैग इज डिफरेंट नयन. तो जब भी आप कोई टेबल बनाओगे, उसके ऊपर अगर आपको कैप्शन लिखना होगा, दैट विल कम इनसाइड द कैप्शन टैग. ओके, नेक्स्ट अप बेसिक कमांड्स हम लोगों को पता चल गए. लेट्स जस्ट रिवाइज अगेन व्हाट वी हैव स्टडीड. वी आर क्रिएटिंग रोज. दिस इज अ रो, अगेन दिस इज अ रो एंड दिस इज अ रो. ठीक है, ये सब tr से क्रिएट होता है. तो लेट्स से जो फर्स्ट रो है, रो 1, कैन एनीवन जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स हाउ विल यू क्रिएट द फर्स्ट रो. इफ इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कैन स्किप इट, बट आई विल आल्सो शो यू हाउ टू डू दैट. तो सबसे पहले ऑब्वियसली हम लोगों ने टेबल टैग यूज किया है. I'm not using any attributes because you can use it according to your own choices. But उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, tr टैग यूज करेंगे.
Now tr tag open and close. This is a very easy way to learn. अगर आप कोई भी bracket create करोगे, obviously you are closing it again. So similarly, when you start tr, you can also close tr. Now everything in between, the role, name and GPA, इसके अंदर आएगा. So should I use td or should I use th? Can anyone answer? सुमित, नयन. Yes, हम लोग यूज करेंगे th because this part is in bold. ठीक है, तो हम लोग th लिखेंगे एंड देन ऑल्सो क्लोज th. यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रोल. So I hope you are understanding. It is not a very clean answer, but I hope you get it. ठीक है, th यूज करेंगे. And over here, it is the exact same thing, but instead of th, we are using td. Why? Because it's a normal text. It's not a heading. All right. Till now, everything is clear. Tables is the most important concept from HTML. जो हमारा audio और video part है, that is quite easy. There are only two things which you have to remember. All right. So next up is attributes of table. Now आपने जो table create किया है, now you are web designing, right? आप सिर्फ एक simple table नहीं create करोगे. अगर हो सकता है कि आपको different colors चाहिए हो, for example, if you want a green table, if you want a red table, it also depends on you. तो उन सब चीजों के लिए हम लोग attributes यूज करते हैं. फर्स्ट एट्रीब्यूट इज बॉर्डर. तो जो आपके बॉर्डर की थिकनेस है, ये डिसाइड करता है. दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है. आफ्टर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट सेल स्पेसिंग इज. एट द स्टार्ट ऑफ दिस सेशन हम लोगों ने डिस्कस किया था सेल स्पेसिंग क्या होता है. इट इज दिस एरिया. इफ सेल स्पेसिंग इज 0, व्हाट विल हैपन इज योर टेबल विल लुक लाइक दिस. और अगर सेल स्पेसिंग होती है, देन ये जो स्पेस आप देख रहे हो वैसा दिखेगा. Syntax for hyperlink. Okay, right. So let's go ahead, and the other important thing is cell padding. Again, we have discussed cell padding. Cell padding is the distance between the text of the cell and the cell itself. Another important part is align. Now हम लोग generally Microsoft Word use करते हैं, PowerPoint use करते हैं. Obviously you have an option of alignment, but over there is one extra thing जो justify होता है, वो यहाँ पर available नहीं है. You can only align in such a manner. On the left, in the center and on the right. Now आप अगर देखोगे, ये तो horizontal x direction में है. You can also do it in the y direction, but generally उस चीज पे questions नहीं आते हैं. But if they ask you how you can do that, the answer is top, middle and bottom. Just like you have left, right and center, आप top, middle और bottom align भी कर सकते हो. All right, so let's go ahead. That was about the table tag. टेबल टैग हो गया. फिर टीआर टैग में भी सेम चीज. वंस यू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल एट्रीब्यूट्स आर देयर, दे आर कॉमन फॉर ईच ऑफ द टैग्स. अलाइन हो गया. ठीक है. अब यू कैन आस्क द डाउट्स इन द टेलीग्राम ग्रुप. आई होप यू हैव द लिंक विद यू. वी अलाइन, यस. फॉर दिस पार्ट द attribute is v-align, but I think from your syllabus the only part which you have to remember is align, but it is good to know top, middle and bottom. All right, so let's go ahead and solve a question. It is a very simple table. I hope you are able to see this. How many rows are there? Can anyone answer how many rows and how many columns? This is the table. We have 1, 2, 3, 4 and 5 rows. Basically जो tr टैग है वो कितनी बार यूज होगा? 5 टाइम्स. ठीक है. और यहाँ पर हर जगह पे हम लोग only for this we'll be using th, right? 5 rows and 2 columns exactly. So now we will focus on this part. Everyone else is comfortable with the starting thing. If you're comfortable with the HTML coding, please put a thumbs up. If not, I will explain this part. अगर comfortable है, please put a thumbs up. Okay, Baron is studying it for the first time. Baron, are you finding it easy or is it complicated? ठीक है. So first thing, for the first TR, please focus on this. हम लोग TR start करते हैं, TR close करते हैं, and we have two cells, right? We have two cells. So the first cell is this
The second cell is this. If you are not comfortable with creating tables, I would suggest to write in your notebooks or pages because it helps you practice. क्योंकि आप सिर्फ एग्जाम में जाके नहीं सोच सकते हो कि I know TR, I know TH. You have to practice about 5 questions at max. उससे ज़्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. 5 questions are quite enough. ठीक है. So for the next thing again आपको same चीज ही repeat करनी है, but the only difference is TH and TD. So was this clear? It is not difficult. आपको सिर्फ पहले देखना है कि आपको कितने रोज क्रिएट करनी पड़ेंगी. अकॉर्डिंगली आपको उतनी बार टीआर क्रिएट करना पड़ेगा. ठीक है, 5 बार आप टीआर क्रिएट करोगे एंड फॉर एवरी टाइम यू हैव 2 कॉलम्स लाइक दिस. ओके, ऑल राइट रविशा, लेट्स गो अहेड एंड सी अदर थिंग्स. आपको अगर ये टेबल क्रिएट करना है, हाउ विल यू डू दैट? लेट मी जस्ट क्विकली टेल यू. हम लोग टी आर, आई एम नॉट क्लोजिंग द टैग्स नाउ, हम लोग सीधा चेक करेंगे नेम. Here this is the first row. Now if we start looking at the second row, all right, please specifications वाला questions बता दो. All right इशिता, at the end of the session I have taken the question from your sample paper, हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे. ठीक है. Use caption tag. Yes, so when you use table, what is the first tag that you encounter after table? It is generally the caption tag. Caption में आप लिख सकते हो horizontal headers. ठीक है, बट हम लोगों ने यहाँ पर जो हेडिंग्स डाली है, इट इज इन द एक्स डायरेक्शन. व्हाट इफ आई वांट इट इन द वाई डायरेक्शन? So this is the code which you can take a screenshot. Please put a thumbs up if you want me to move to the next slide. हम लोग देखेंगे पहले तो यहाँ पर x डायरेक्शन में हम लोगों ने हेडिंग्स डाली. अगर मुझे y डायरेक्शन में हेडिंग्स चाहिए तो मैं क्या करूंगा? Take a screenshot. We are moving ahead. All right. As I was saying, now हम लोग इस डायरेक्शन में हेडर करेंगे. Number of rows stays the same. TR, फिर what I do is सबसे पहले आएगा TD. TD में मैंने लिखा name. Then not TD, sorry. यहाँ पर आएगा TH. This is TH and this is TD. Then again TD. Right, so this is TH, then TD, TD, again TH, and then TD and TD. Right, so in this way आप vertically भी headers लगा सकते हो. ठीक है, हम लोगों ने दो चीजें देखी, horizontal headers and vertical headers. So with this we have almost completed the 50% of tables. So Bajrang is saying I did not understand anything. So Bajrang, did you just join now? अगर आपने just join किया है, what I would suggest is थोड़ा YouTube है आपके पास, you can just rewind for a bit. You'll be able to understand everything. And if still not understandable, you can join in the next session जहाँ पर हम लोग हर चीज डिस्कस करेंगे. ठीक है, and this is the table जहाँ पर हम लोग देख रहे हैं TH, right? And TD, again TH, and so on. ठीक है. All right, so let's go ahead. What we have discussed till now. हम लोगों ने देखा हाउ यू कैन क्रिएट टेबल्स. आपको अगर हेडर वर्टिकल लगाने हैं, हॉरिजॉन्टल लगाने हैं. वी टॉक्ड अबाउट सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, एंड नाउ व्हाट वी विल टॉक अबाउट इज रो स्पैन एंड कॉलम स्पैन. बट बिफोर वी गेट इनटू दैट, आई जस्ट वांट टू आस्क सम सिंपल क्वेश्चंस. लेट्स स्टार्ट नंबरिंग द रोज. कितनी रोज हैं? हम लोग यहाँ से भी नंबर कर सकते हैं, यहाँ से भी, बट प्लीज डो नॉट गेट कंफ्यूज. इन अ नॉर्मल टेबल दीज आर द रोज विच यू हैव. ठीक है, it is not related to HTML but just building a concept. If you look at
फेवरेट, कैन एनीवन टेल मी फेवरेट जो वर्ड है, जो कॉलम है और जो सेल है, वो कितने रोज के लिए है? इफ यू सी दिस इज ओनली वन रो, एंड इफ यू लुक एट दिस, हाउ मेनी रोज? फेवरेट कितने रोज को स्पैन कर रहा है और एक्सटेंडेड है कितने रोज के लिए? दिस रो एंड दिस रो, ठीक है? तो व्हाट आई से इज द फेवरेट सेल is spanning across two rows. Am I right? Do you agree? ठीक है. Similarly, ये जो least favorite है, it is also spanning across two rows. So this is about row spanning. Always remember what is a row and what is a column, and you will be able to solve these questions properly. Please explain the table. All right, Bajrang. After 5 minutes, I'll be explaining tables again. ठीक है. Now let's look at this. Can you tell me this column, how many rows? Options are A, B, C, 1, 2 or 3. How many rows are being spanned? Right, Corby is saying row spanning is happening exactly 3 rows. So if I ask about this thing, what is happening here? Row span तो नहीं हो रहा, column span आपको दिख रहा होगा, क्योंकि आपके पास कितने कॉलम्स हैं? यू हैव कॉलम्स आर 3. देयर आर 3 कॉलम्स, राइट? दिस एंड दिस. तो जो प्रोडक्ट है कितने कॉलम स्पैन करेगा? ईशान इज सेइंग 3, कॉर्बी सेइंग 3 एंड सेइंग 3 कॉलम्स, राइट? तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कॉलम स्पैन एंड रो स्पैन. इट इज नथिंग बट आपको कितने कॉलम्स में वो डालना है, कितने रोज में वो डालना है. सो वी विल लुक एट मोर एग्जांपल्स नाउ. So let's start with the basic. First row, TR. I am not using the angular brackets after this, okay? But you have to understand. TH, 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 TH. Can anyone tell me what's happening here? What I'm saying is, this is the first row. और कितने TH use हुए? 1, 2, 3 and 4. And we can write countries, capitals, population, language. ठीक है. Let's move on to the next one. Again TR. Now what we are seeing is TD, TD. Okay, so हमारा सेकंड भी हो गया. फिर थर्ड के लिए हम लोग क्या करेंगे? TR, TD, TD, TD and TD. Please remember what we are doing is, हम लोग यहाँ पर सेल्स क्रिएट कर रहे हैं. 4 किए हैं, यहाँ पर भी 4 आपके सेल्स हैं. TD में यहाँ पर this, 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 and in this one Sweden, Stockholm, 9 million and Swedish. Now comes the fourth row. Can anyone write in the chat box what will be the appropriate way to create this? Obviously हम लोग TR create करेंगे, ठीक है? Now we are creating the first cell. First cell आप लिखोगे TD, but this cell is spanning across 2 columns. 2 कॉलम बड़ा है वो. सो व्हाट वी से इज, मैं टीली बना रहा हूं बट जो कॉलम्स है वो 2 होने चाहिए इसके. सो आई से कॉलम स्पैन इक्वल टू 2. तो क्या होगा इसके बाद? आपका जो ये सेल है, इट विल बी क्रिएटेड. आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग इनसाइड द टीडी पार्ट क्योंकि ये ब्लैंक है, ठीक है? जैसे ही मैंने ये क्रिएट किया, तो व्हाट इज हैपनिंग इज, पहले ये पार्ट क्रिएट होता है, देन दिस विल बी क्रिएटेड, एंड आफ्टर दैट व्हाट आई से इज, I write TD, then I write 318 million, then again TD. 8402 can you tomorrow? Aditya, I do not know, if you go to YouTube you might find a lot of people uploading some content, but I'm glad that you're here and I saw your comment. Okay, everyone understood? We are looking at row span and column span. We have covered a few examples. हम लोग आगे भी देखते हैं. Let's have a look at this example. Sumit, you can use double inverted commas जब आप values डाल रहे हो, और single inverted commas. Why we use this is because ये as it is आपको लिखना है. It is not a HTML code or it is not a markup language. It is just a value.
Right. So let's start with the first row. ठीक है, first row is this part. ठीक है, do you want me to write it or this code is visible to you? What do we have to write if there's no data in the cell? So you can leave the cell empty. अगर आपके cell में कुछ भी data नहीं है, if it's an empty cell like this, so what you can do is just write td call span and just close the td. आपको बीच में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. All right. So you can create this row easily. आपको क्या यूज करना है? टेबल हेडिंग यूज करना है हर जगह पे. देन कम्स द नेक्स्ट रो. बट इफ यू लुक एट दिस नाउ, दिस देयर कम्स द इंपॉर्टेंट पार्ट. जब हम लोग ये रो क्रिएट करेंगे, लेट्स लुक एट द सेकंड वन. आई एम क्रिएटिंग द सेकंड रो. ठीक है, तो सिंपली स्पीकिंग हम लोग टेबल हेडिंग क्रिएट करेंगे जहां पर लिखा है रॉबिन एस. ठीक है, फिर हम लोग टेबल डेटा क्रिएट करेंगे जहां पर लिखा है 100. अगेन टेबल डेटा जहां पर लिखा है 75. नाउ वी हैव क्रिएटेड दिस मच. बट जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आ रहा है, आवर नेक्स्ट स्टेप इज क्रिएटिंग दिस एंटायर थिंग. So what we do is I write td, but यहां पर what is happening? 3 rows. यहां पर हम लोग 3 रो को स्पैन कर रहे हैं. That's why we have to use row span. And please use the inverted commas, it is necessary, right? And then I can write n/a and then close the td tag. What will happen is आपका यहां तक सब टेबल क्रिएट हो चुका है. So please put a thumbs up if you understood till this part. I'm erasing the ink on the slide. Only study, I'll be answering your question at the end of the session. During the session सिर्फ थोड़ा थ्योरी पे ध्यान देते हैं. Full syllabus one shot definitely Tamanna. Tomorrow there will be a one shot for IT 402. आज computer applications 165 के लिए one shot होगा. Please go to the channel, आपको दिख जाएगा वहां पर हम लोग कब लाइव आएंगे. ओके, तो हम लोगों ने कहां तक कर लिया? हम लोगों ने इतना देख लिया है ऑलरेडी. ठीक है, this is row 1, this is row 2. Let's look at row 3. Row 3 is also very easy. What we do is tr, right? tr यूज किया, उसके बाद फिर th सुमित लिख दिया. देन अगेन वी राइट td 80 लिख दिया. वी अगेन राइट td 95 लिख दिया. तो whenever you are creating HTML table, सबसे पहले आपको खुद ड्रॉ करना पड़ता है so that you don't mistake. ठीक है, यहाँ पर आपके पास 3 कॉलम्स हैं, this, this and this, and this one is already created. Now comes the important part. हम लोगों ने देखा row span. Now we will look at column span. So fourth row will look like this. ठीक है, सबसे पहले आया टेबल हेडिंग. Then we write this is done. Next up is table data, right? But over here what is happening? अगर आप देखोगे the dropped course, ये जो सेल है, it is spanning across 2 columns, right? ये जो है it is spanning across 2 columns. So what I do is I use column span. Then I write 2. Then I write dropped course, and then we are done, right? So in this way you can use row span and column span. I would suggest you to practice one more question on this, but I think by the end of this आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा what is row span and column span. For the start you have to understand the difference between rows and columns. Then you have to look at the table one by one, क्या क्या चीजें create होंगी, and eventually you have to start using row span and column span. All right, so please put a thumbs up if you understood this. We'll also practice one more question. तो यहाँ पर what will be used? row span use होगा या column span? Khushi did not understand. Khushi, which part did you not understand? I will be explaining that part again to you. Hello Josh. So everyone understood. So in this part what will be used, row span or column span? So Aditya has given the correct answer. Corvi, Nayan,
तो कॉर्बी इट इज नॉट रो स्पैन यहाँ पर, क्योंकि अगर आप देखोगे it is spanning across 3 columns, so column span will be used. It will be row span for the first row. So just let me explain to you again. यहाँ पर जो सेल है ये 3 कॉलम्स एक्सटेंड कर रहा है. This is column 1, this is column 2, this is column 3. That is why we use column span. अगर रो स्पैन होता तो it would have looked something like this. This thing is row span क्योंकि आपने पूरा merge कर दिया एक साथ. All right. So you will be able to create this. It is a very simple question. CBSE में 2009 में पूछा गया था. All right. Now in your sample paper you have been given something like this. Are you able to see this? So please have a look at this question. All right. So in this table what are we using? यहाँ पर क्या होने वाला है यूज? यहाँ पर होगा row span, and over here there will be column span which is being used, and it is 2. Why 2? Because 1 and 2, and why row span 1 and 2. ठीक है. तो इन these type of questions आपको बोला जाएगा कि इसका specific border क्या होना चाहिए. Okay. So heading HTML table should be the first level of heading. For this, what will you use? You will use h1 tag, right? IT की क्लास अभिषेक प्लीज डू नॉट स्पैम. IT की क्लास कल होगी, ठीक है. All right. So what is the next thing which you have to see? First level of heading हम लोगों ने देख लिया, h1 से होगा. Background color, obviously you will use BG color. I hope you still remember all these attributes. ठीक है. BG color से आप color change कर सकते हो, which is this one. ठीक है. So when you start creating the table, right? यहाँ पर लिखा है कि the table border attribute should be 1. So border क्या है? This thing. This thing is the border and it should be 1. ठीक है. आपको डायरेक्टली ऐसे लिख देना. Then you start by using creating rows. तो यहाँ पर कितनी rows है? 1, 2, 3 and 4. I think this part you will be able to do. The table should exactly contain 4 rows and 4 columns. तो 4 rows हो गई and आपके 4 columns भी हो जाएंगे. It will look something like this. TD, 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 TD. इस रो में भी सेम आएगा. इसमें आपका सिर्फ लास्ट वाले TD में for this part it will look something like this. I hope you are able to understand this part. ये क्या हो रहा है? row span is equal to 2. ठीक है. इस वाले पार्ट में आप लिखोगे TD row span is equal to 2, and for this यहाँ पर जो आपका रो है it will look like this. ठीक है. TD में मैंने लिखा 3, then again TD, but it is spanning across 2 columns. So what I say is call span is equal to 2, and यहाँ पर मैंने लिख दिया FN3 LN3, and after that again once after this we won't be using anything because we have already created like this. आपने इतना टेबल आपका ऑलरेडी क्रिएट हो चुका था, and over here we are using for this part, and this thing will be covered by TD call span. ठीक है. What is the next thing? Even this is done. Attribute row span should be used wherever required. Even this is done. So all of these specifications are done. So अगर आपको एक detailed answer चाहिए कि आपको सब HTML code देखना है, you can go to the CBSE website. The answer is shared. But if you want the PDF, I can share it in the Telegram group. ठीक है. So Josh, I think T head and T foot
Only th tag is generally used. T4, I don't think it's in your syllabus. Only study is saying, please explain again systematically. So just give me a moment. I will just show you the code. So are you guys able to see this? Please share the PDF with annotations. With annotations, I think it will be difficult with annotations, Nayan. I can share the PDF with the text itself. But अगर आप यहाँ पर देखोगे क्या हो रहा है? We are creating this table जैसे body, BG color light cyan, H1 table element, table border आपने देखा, table यहाँ से create होना start हो रहा है. ठीक है? After that you have all these TH. I will be sharing this PDF in the group, but I think you will be able to do that. So let's go ahead and look at the next question now. So just a quick revision. हम लोगों ने क्या क्या देखा है? Main container for TR, TD and TH is table, group, data or all of the above. Please zoom out. Kushi, I'll be sharing the PDF in the group. Please, you can join the group. I have pinned the group link in the chat. ठीक है? So this is the right answer. टेबल के अंदर ही आपके TR रो के लिए, डेटा के लिए एंड हेडिंग के लिए आते हैं सब टैग्स. यस हेमा, एग्जैक्टली. ठीक है. द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ बॉर्डर एट्रीब्यूट इज, इट इज 1 पिक्सल. जब भी आप कोई टेबल क्रिएट करोगे उसमें बॉर्डर एटलीस्ट 1 पिक्सल वाइड होगा. नहीं तो आपको, अगर आप 0 पिक्सल करोगे तो यू वोंट बी एबल टू सी द बॉर्डर. इंक्रीजिंग द सेल पैडिंग मीन्स टू. Now please remember what cell padding is. This distance between the text and the boundary is known as cell padding. अगर यहाँ पर cell padding है तो ऐसा दिखेगा. If there is 0 cell padding, how will it look? It will look like this. ठीक है? Increases the distance between cell and its content. Choose the correct HTML tag to left align the content inside a table cell. We have to align it on the left hand side, right? So this is not there. V align आप left नहीं करते हो. अगर आपको Y डायरेक्शन में अलाइन करना है तब हम लोग V align यूज करते हैं. बट अगर आपको X डायरेक्शन में अलाइन करना है, we use just a normal align. ठीक है? So this is the right answer. Which property tells how many rows a cell should span? Again, I'm giving you the example. So what is happening is, this is row spanning, right? Row span. So A is the correct answer. All right, so with this we are done with the concept of tables. Right now अगर आपको कोई doubts है, you can ask me, but we are done with the concept of tables. At 6:30 we will have one shot of the entire syllabus. One shot, it won't be like I will be covering each and every theory part, but I will be covering each and every concept, because अगर आपका concept clear होगा, you will be able to write the answers. For the brief notes, I'll be sharing it in the Telegram group. Vanchika is asking, sir, are the HTML tags and elements the same thing? I think I have explained this before, but so let's say if I'm using something like this, I have used, okay, I'm using TD and TD close. So what is this? This is HTML tag, right? But अगर मैं TD किसी चीज के लिए यूज कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग लाइक दिस. ठीक है? नाउ दिस इज अ पार्ट ऑफ एन एंटायर HTML कोड. इट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ बिग कोड, राइट? आपकी जो HTML फाइल होती है .html, उसका ये पार्ट होता है. सो दिस थिंग इज नोन एज HTML एलिमेंट. ओके? सर, माय PC isn't compatible with Windows 11. What should I do? I think Veeraditya, you can't do anything.
but you should wait for Windows 11 to be available for your PC. If not, I think आप ISO files download कर सकते हो for Windows 11, but अगर आपका PC support नहीं कर रहा है, it's not wise to use it. Khushi is saying, can you please explain some questions of subjective type? Khushi, if you go to this channel, जिस चैनल पे आप अभी आए हो, मैंने चैनल में ऑलरेडी HTML टेबल्स के लिए सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस शेयर किए हुए हैं. यू कैन गो देयर एंड हैव अ लुक. आई थिंक इट विल बी अ गुड प्रैक्टिस फॉर यू. ठीक है. ऑल राइट. लैपटॉप शिफ्ट की इज नॉट वर्किंग. यशराज, आई थिंक आपका शिफ्ट की अगर काम नहीं करेगा, यू कैन यूज स्टिकी कीज. समवन गिव अ वेरी नाइस आंसर. एनीवेज, Dia is asking, okay, so Dia, for IT 402, tomorrow there will be sessions for SQL queries. ठीक है. फिर उसके अलावा आई थिंक नेटवर्किंग के भी थोड़े कंसेप्ट्स बाकी हैं. शायद पैकेट स्विचिंग हम लोग वो डिस्कस करेंगे. देन वी विल हैव वन शॉट and at the end we will have a sample question paper discussion and practice. Yashraj is asking what sticky key. You can google it, Yashraj. अगर आप शिफ्ट की 5 बार प्रेस करोगे आपका वो वर्जन एक्टिवेट हो जाता है. एनीवेज, I think with this we have finished with the concept of tables. If any doubts you can ask in the group, or you can also watch the repeated session. Why did you leave Unacademy? Veeraditya, I want to do something else as well. What I did with Unacademy, I'm still doing the same thing. I'm actually a software engineer now. Okay. So do we have to draw all the tags of table in straight line or in zigzag manner while writing input for the table? So Sumit, it is completely fine. अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो, अगर आप if you're writing like this, it is fine. If you're writing like this, even then it is fine. क्योंकि जो आपका HTML browser है, it will read it as the same. Why TD tag is used in HTML? आपको अगर एक टेबल बनाना है, इसके अंदर you have to fill some information. For this specific purpose, TD tag is used. Aditya, what is your question? SCP and SSH. Can you explain what is SC protocol? I think it is SSL and SSH, right? Thank you, Corby. Okay. Aditya, I think you were asking about SSL and SSH. So the basic differences, जब आप कोई भी Chrome यूज करते हो, किसी भी वेबसाइट को सेव करने के लिए there is a padlock sign. तो जो padlock sign क्यों आता है? Because it is of a secure socket layer. But अगर आप बहुत ही ज़्यादा probably अगर आपके पास एक Swiss banking portal है and you want it to be very secure all over the world. So in order to implement SSH, which is quite very safe, much more safer than SSL, you have to use some hardware, right? So it creates a, so I have PC1 and this is PC2, right? इनके जो बीच में connection हो रहा है, इसको secure करने के लिए there is a tunnel which is created. This tunnel is known as secure shell. Timing of next session of IT 402, it will be tomorrow. Secure copy protocol. Is that in your syllabus? Region, secure copy protocol. Only study. अगर आपको practice चाहिए, please you can refer to any content available on YouTube. Not necessary आप सिर्फ मेरा ही channel देखो. But if you have seen my videos before, I think it will be better for you to understand the concepts because I have taken in such a storyline. All right, Corvi. Sir, HTML, secure copy protocol.